the more problems that you bring up just now, either in the form of questions or in the form of technical queries or in the form of any kind of troubleshooting requirement or anything, आप जितना ज्यादा हमसे पूछेंगे उतना ज्यादा मैं भी थोड़ा सा और आगे पता करके आपको बताते रह पाऊंगा, चाहे अभी, चाहे बाद में, चाहे अगले कोर्स में. So please ask as many questions as possible. Many of you have worked with smart coaches, many of you have not. So those who both and anybody else who is there in the session, please feel free to ask your questions. So now there should not be any issue with my screen, because with my screen sharing, because I think that there is no issue with my own Wi-Fi. This is my own hotspot, so I think this will not be an issue. अच्छा, मैं इंग्लिश में बोलूं या हिंदी में बोलूं, क्या आप प्रेफर करेंगे? सर गुड मॉर्निंग. हिंदी और इंग्लिश? सर गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग बलवीर, बताइए हिंदी या इंग्लिश? सर आपकी हिंदी बड़ी प्यारी है, प्लीज सर आप थोड़ा सा हिंदी में भी समझाएं सर. मैं हिंदी में समझाऊं? अच्छा, जी सर. क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग यहाँ पे साउदर्न रेलवे से भी हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि मिस्टर प्रवीण कुमार, would that be okay with you, और मिस्टर विजय कुमार? चलो ठीक है, I'll try to speak some in English, some in Hindi, देखते हैं क्या होता है. I am also comfortable with Hindi, sir. Okay, then तब हिंदी में बात करते हैं. Okay, तो good morning everybody. New developments and smart coaches is our topic today. तो अब आप लोगों के हिसाब से मतलब ये एक्चुअली मैं एक पोल करना चाहूंगा. आप लोगों के हिसाब से ये कोचिंग इंप्रूवमेंट जो है रिसेंट रेलवेज में, जितनी सारी कोचिंग डिपो की इंप्रूवमेंट्स आई है, जितनी सारी कोचिंग टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स आई है, जितने सारे हम लोगों ने अपने कोचेज में सुधार लाया है, कोचिंग सर्विस में या कोचेज में हम लोगों ने जितना सुधार हम लोगों ने लाने की कोशिश की है रेलवेज में करीब पिछले 6-8 साल में, रीसेंट पास्ट से लेकर अब तक आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा मुख्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा तरक्की की हो, या जिसमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा जोर दिया हो, जहां पे कुछ बहुत ही खास या बहुत ही आवश्यक बहुत ही खास या बहुत ही आवश्यक तरह के सुधार लाए गए हों हाल के कुछ सालों में? Sir, all areas, sir, but safety we taken more important, sir. Okay, so I think this would be a very good opportunity for a poll. So सर पैसेंजर एमिनिटी पे ज्यादा जोर है सर. तो यही जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यही मैं पोल खोल रहा हूं, एंड यही अभी आप इसमें काइंडली जवाब दे दें. Just a very quick open पोल आप लोगों को दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे. प्लीज रिस्पॉन्ड. मिस्टर सुरेंद्र कुमार, प्लीज म्यूट. हाँ, those of you who can see the poll, please respond. Otherwise, please you can unmute and you can respond. आप लोगों को क्या लगता है, ये कुछ किसी ने अभी कहा कि पैसेंजर इम्यूनिटी पे ज्यादा जोर रहा है, किसी ने कहा सेफ्टी पे ज्यादा जोर रहा है, तो कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके विषय में? आपके हिसाब से हम लोग के सबसे जरूरी क्षेत्र कौन से रहे हैं जिसमें उन्होंने सुधार लाने की कोशिश की है कोचिंग में? अभी तक मैं देख सकता हूँ कि
passenger amenities and safety is half and half, और इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं है किसी का, एंड आधे लोगों ने अभी पोल शुरू नहीं किया, तो जिन लोगों ने पोल शुरू नहीं किया है प्लीज प्लीज आप रिस्पॉन्ड करें, प्लीज रिस्पॉन्ड टू द पोल, humble request. Sir, I would like to suggest for all three, means all of the above option, which is not given. Okay. Amenities भी Okay. important है, also safety is for नहीं, important तो सब है, लेकिन हम thing. लोगों ने सबसे ज्यादा किसमें फोकस किया है? For मेरा safety सवाल we ये are है। improving. Sir, I think both A and B. Both A and B, that is to say both passenger amenities and safety. Yes, sir. And Mr. Vijay Kumar, you were saying only safety. No, sir. For safety purpose, we need to travel safely, as well as amenities also should be there. For safety, electronic and computer systems have been emerged. Okay. So all of the three, I feel. Okay. So, so you are saying that we have basically applied electronic and computer systems to safety. Yes, sir. Okay. Arshi, what were you saying? When you said both A and B, how have we achieved both A and B in the context of coaching? Or anyone else would like to respond? Sir, I think that in recent years, I have recently joined Chandigarh Depot, but sir, Right. last 1 year में मैंने देखा है कि passenger amenities और safety में we are focusing more and more to Okay. improve them. Twin program. Okay, got it. Okay. Anyone else would like to say something? Sir, we are also focusing on more safety, sir. Safety, if safety achieves, all these about two things will automatically achieved. We can get that. Acha. Okay. Anyone else? And please, those who have not started responding to the poll, please respond here. Half of you are not responding to the poll, and that is not a very good showing. Please, जितने लोगों को पोल पे जवाब देना हो अभी बचा हुआ, प्लीज आप अपना जवाब दीजिए। जी, ये और भी दोनों का सेफ्टी हमने किया, एमिनिटीज में भी किया, सेफ्टी में भी किया है, एमिनिटीज में भी किया है। ओके। मैं देखता हूँ हम लोगों के पास एएमई भावनगर भी है, एडब्ल्यू मोतीबाग भी है। इफ एनीबडी वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। Is course में there is somebody from second to PCME NCR is also there. Good morning, sir. So is there anybody here from Northern Railway? Other than Arushi? Amy, hello. Yes, please go ahead. Amy Bhavnagar had unmuted this. Sir, Please go ahead. actually, sir, all three are there, sir. Passenger amenities, we can see boards for the coming stations. It is displayed there. For safety, sir, we can monitor the condition of bearing. Sir, and electronic and computer IT based, sir, we can retrieve data, whatever like the CCTV data and sir, other data while the coaches are running, we can retrieve the data and Right. analyze it. So according to me, sir, all three would be there. Okay. The poll I think is just coming to an end, and we have got about 60% of you have responded, 40% of you have not responded. So anyway, let me share the poll results with you. सब लोग को दिख गए होंगे poll के results. So most of you feel, I mean, it is a, not sure how representative this poll is because nearly half of you did not respond, but those who responded, ठीक है, passenger amenities and safety के ऊपर ही लोगों का focus है. Fine. So in many ways you are correct that yes, these two have been the major focus of our work in coaching over the course of the last at least half decade, if not more. So this is correct, fine. But what I want to show you is that is why smart coaches is this
such a new topic. आप लोगों के जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले शायद मिस्टर प्रवीण कुमार ने बोला था कि what we are doing is we have used electronic and computer systems in order to achieve these twin objectives of passenger amenities and safety. यानी कि इसी के माध्यम से हम लोगों ने वो चीज हम लोगों ने इन दोनों पे काम किया है. तो ओके. Second thing is कि actually generally a lot of people respond in the other side. Many people respond in the fact that it is electronics. But whatever the case may be, whether it is improvements in passenger amenities, whether it is improvements in punctuality, whether it is improvement in safety, or whether it is improvement in things like inspection schedules or life cycle assessment of the various parts like bearings, etc. वो सब होने के बावजूद आपको क्या लगता है कि क्या सारी इंप्रूवमेंट्स हाईटेक हैं? क्या अगर हम कहेंगे कि ये न्यू मॉडिफाइड कोच है, इंप्रूव्ड कोच है, या फिर अगर हम कहें कि ये एक बहुत अच्छा आपके पास एक नया सुधार आया है जो कि हम लोगों ने सोचा है अपने पंक्चुअलिटी को इंप्रूव करने के लिए, will you automatically assume that it is a high tech improvement? Will you automatically assume कि इसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का काम या डिजिटल काम हुआ है in this area, any of these areas? No, sir. Exactly. No. Exactly. Thank you, Vijay Kumar. So in this area, improvements can be high tech. In fact, for most of them, improvements are the vast majority of improvements have at least some tech component. They have at least some component of IT in the form of data science, in the form of artificial intelligence, in the form of something or the other. But in no case is it 100% just DSAI, and in no case can we expect the DSAI to fill our gaps completely as far as our maintenance improvements are concerned. क्योंकि improvement there is room for improvement everywhere. And एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि देयर इज रूम फॉर इंप्रूवमेंट एवरीवेयर. सो नो, ऑल इंप्रूवमेंट्स आर नॉट हाई टेक. अगर आपको आईटी की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको कंप्यूटर की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की या पीएलसी की इन सब प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा अच्छी से जानकारी नहीं है, फिर भी आप ऐसा मत सोचिए कि कोच के सारे इंप्रूवमेंट्स आपकी समझ से परे बन गए. कोच के बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे आपके जैसे इंजीनियर्स नहीं किया है. So what are some such improvements? Let's take a look. How many of you recognize these names? All of you probably recognize these names, right? कोई ऐसा है जिसको ये इनमें से कुछ नाम पहचान में नहीं आ रहे हैं? तेजस, हमसफर, अनुभूति. These are all the improvements in LHB. These are all the new and improved coach models or coach designs. These are improved coach designs. And what do we mean by improved coach designs? We mean that these coaches or these models have given us something. These models have given us something that was not there in the original LHB. That was not, they have fulfilled some need that was not there in our original LHB coaches. So for example, can someone tell me very quickly, anybody, please unmute yourself. आप कोई भी मुझे बता सकता है इनमें से इन कोचेस के कुछ खास इन कोचेस की कुछ खासियतें या इन कोचेस की कुछ गुणवत्ताजनक चीजें, किसी कुछ भी. Can somebody tell me? कोई भी कि फॉर एग्जांपल हमारे उदय कोच की क्या खासियत है या हमारे हमसफर कोच की क्या खासियत है? कोई कुछ बता सकता है? एनीवन? ये सारी वो कोचेस हैं जिनके साथ हम लोगों ने काफी काम किया है. और हाँ, ये सारी वो कोचेस भी हैं जिनके साथ हम लोगों ने जिनमें हम लोगों ने सफर भी किया है, हम लोगों ने इनको यूज भी किया है एज कस्टमर्स. तो
अच्छा, ये वाली कोच कौन सी है? कैन समबडी टेल मी? Pardon, sir. ये वाली कोच जो मैंने अभी हाईलाइट करी है आपके स्क्रीन के टॉप लेफ्ट में, ये कौन सी कोच है? ये कलर स्कीम? See, Tejas Express, sir. Yes. तेजस, ओके, Express AC chair. क्या, एब्सोल्युटली। और ये व्हाट अबाउट दिस? These fittings are found in? So, two tier. So it's not complete here. The two tier only, no? So it seems to. No. Yeah, of course, this is two tier. But these fittings are found in which kind of coach? Those fittings we can see. I have experience. Humsafar it is usually it has three tier, but two tier I can see here. Similar kind of. Antyodaya, somebody said Antyodaya, and that's the correct answer. Yes. Then, how many of you know about something called a high capacity parcel van? देखिए कभी? सुना है? Yes, sir. इसका क्या फायदा होता है हाई कैपेसिटी पार्सल वैन का? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? डोंट से इट इज अ पार्सल वैन, इट इज ऑफ हाई कैपेसिटी। हम लोगों ने कैपेसिटी कैसे बढ़ाई है एचसीपीवी की? एनीवन? चलो, व्हाट अबाउट ये एसी 3 tier इकोनॉमी? हैज एनीबॉडी ट्रैवल्ड इन एसी 3 tier इकोनॉमी? एनीवन? किसी ने यूज किया है इसको? Yes, sir. But I've seen, but I didn't travel. I traveled Okay. in the same train which is having 3T. Right. Yes, sir. Right. Okay. So as you can see, there are many kinds of coaches, and thanks a lot, Vijay, Mr. Vijay Kumar, for being so responsive. Thank you very much. So yes, there are so many different kinds of coaches, and there's so many different, and each of these is, as I said, it is an improved version. ये एक सुधारा हुआ प्रारूप है हमारे मूल LHB कोच का, जो कि जिस डिजाइन के साथ हम लोग अभी तक काम कर रहे थे वो। तो अच्छा, इनमें से इन सुधारों में से या इन इंप्रूवमेंट्स में से हम लोग वी कैन सी, जो हम लोग कह रहे थे कि लो टेक एंड हाई टेक इंप्रूवमेंट्स, तो लो टेक इंप्रूवमेंट्स पर हम तो का एक काफी लंबी लिस्ट है हम लोग के पास। हम लोग के पास है अपना ये स्लाइडिंग डोर्स, प्लग डोर्स, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोटेटेबल सीट्स, मॉड्यूलर टॉयलेट्स या मॉड्यूलर एमिनिटीज हो गई अलग अलग तरह की, है ना। ये हाई कैपेसिटी पार्सल वैन में हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगेज रैक्स लगाए हैं, तभी तो हाई कैपेसिटी बनी है, राइट। हम लोगों ने एक्स्ट्रा एक फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर अंदर लगाया है जिसमें कि हम छोटे आइटम्स को ज्यादा निकाली कर सकें, ताकि हम लोग पार्सल ट्रेन रन कर सकें या किसी भी तरह का कोई और हम लोग किसी भी तरह का कोई और सुधार ला सकें। तो जैसे कि आप में से कितने लोगों ने अमेज़न से सामान मंगाया है कभी भी, या फ्लिपकार्ट से? सर बहुत बार। बहुत बार। एंड उनमें से उस सामान में से कितनी बार वो सामान ट्रेन से आपके पास पहुंचा है, पार्सल वैन से? एक बार। एक बार। तो इसी मार्केट को कैच कर, अच्छा आपके पास बिल्कुल नहीं, और मिस्टर विजय कुमार के पास एक बार। सो यहाँ पे जमालपुर में भी एक बार मैंने देखा था कि वो साउथ से कहीं पे उन्होंने कलकत्ता तक उन्होंने पार्सल ट्रेन पे लाद के सामान भेजा था, और फिर उसको कलकत्ता से बाय रोड ही आया था मैं ट्रैक कर रहा था उसको। तो इसलिए द रीजन इज कि हम लोग के पास पार्सल ट्रेन की बहुत कमी है, पार्सल ट्रेन की कमी है, एंड पार्सल ट्रेन मार्केट, एंड इनफैक्ट पूरा जो हमारा डोमेस्टिक शिपिंग मार्केट है, ई रिटेल, ई कॉमर्स, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज हैं, डेल फॉर एग्जांपल अपना प्रोडक्ट खुद मार्केट करके खुद बेचती है। किसी के पास अगर किसी ने अगर रिसेंटली कॉम्प्यू इंडिया से अगर डेल का लैपटॉप लिया हो, या फिर there are many books that are many textbooks that are shipped in this way। ये बहुत लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप लोग
रिसेंटली आए हैं रेलवेज में या रिसेंटली आए हैं अपनी नई पोस्टिंग में, तो बहुत लोगों को याद होगा कि जब हम लोगों ने अपना एग्जाम क्लियर किया था तो क्वेश्चन पेपर्स जो थे वो एक आर्मर्ड व्हीकल में आए थे। तो लेकिन अगर हमारा ट्रेन सेंटर थोड़ा दूर था तब भी वो उसी आर्मर्ड व्हीकल में आए थे। ये अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा क्वेश्चन पेपर सपोज करिए मेरठ में छप रहा है, तो मेरठ से लखनऊ वो आर्मर्ड व्हीकल क्यों आएगा? मेरठ से लखनऊ व्हाई कैन नॉट बी ब्रॉट इन अ सिक्योरली लॉक्ड पार्सल वैन? तो इसी इसी हिसाब से हम लोगों ने ये सब चीजें सोची। हम लोगों ने ये सब चीजें हम लोगों ने मतलब रेलवे में जितने भी हमारे दिग्गज लोग हैं उन्होंने ये सब चीजें सोचने की कोशिश करी कि किस तरह से हम लोग इस तरह से अलग अलग मार्केट्स को कैप्चर कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ प्लग डोर? कैन एनीबॉडी टेल मी? ये प्लग डोर व्हाई इज इट सो सिग्निफिकेंट? ये हम लोग क्यों यूज करना चाहते हैं? व्हाई इज इट सो इसके ये ऐसा क्यों है कि ये हम लोग यहाँ पे साइड पे हम लोगों ने लगा रखा है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? जस्ट एज एन एग्जाम्पल। Where else have you seen a plug door? कितने लोगों ने फ्लाइट ली है कभी भी? कितने लोगों ने फ्लाइट ली है कभी भी? लिए सर। ली है। तो जब आप फ्लाइट में चढ़ी थी तब आपको तब वो आपने देखा होगा कि फ्लाइट की जब दरवाजा बंद होता है, इज दैट अ प्लग डोर और इज दैट अ स्लाइडिंग डोर और इज दैट अ हिंज्ड डोर? किस तरह का डोर होता है वो? सॉरी सर, नोटिस चलिए नहीं अगले किया स्लाइड था। में हम दिखाते हैं कि कौन सा है। जी, जी सर, नोटिस नहीं किया था सर, सॉरी। नोटिस नहीं किया था। अब नाउ ओके, सो ऑल ऑफ यू नोटिस दीज इंप्रूवमेंट्स। इनमें से लेट्स क्विकली डिस्कस। कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या चीज है? ये जो मैंने अभी सर्कल की है। Try a different color. Can somebody tell me what this is? My favorite symbol, the question mark. ये जो रेड से आपके स्क्रीन पे आउटलाइन है, ये थर्ड पिक्चर ऑन द टॉप। ये जो दरवाजा है, किस तरह का दरवाजा है? एंट्रेंस डोर। व्हाट? स्लाइडिंग डोर? हाँ, मिस्टर प्रतिपा विजय कुमार, गो अहेड। यस सर, स्लाइडिंग डोर जैसे लग रहा था। स्लाइडिंग डोर जैसे लग रहा था, ओके। स्लाइडिंग डोर ये नहीं है एक्चुअली। स्लाइडिंग डोर, इंटरनल स्लाइडिंग डोर ये है जो आपको ये टॉप राइट हैंड कॉर्नर में दिखेगा, द फर्स्ट पिक्चर। दिस इज एन इंटरनल स्लाइडिंग डोर, ऑटोमेटिक, इनफैक्ट एन ऑटोमेटिक इंटरनल स्लाइडिंग डोर। यहाँ पे आप उसका टेम्परेचर सेंसर देख सकते हैं। ये है आपका ये आपका प्लग डोर है। दिस इज अ प्लग डोर, which is to say it is a door that is available that is available as a cavity। वो एक खुला हुआ खांचा है और फिर उसके बाद एक जिस तरह से एक खांचे में जाके प्लग घुस के उसको उसको बहुत टाइटली बंद करता है। अगर आप कहीं भी बैठे हैं तो आप देख सकते हैं नियरेस्ट प्लग वो एक हॉलो खांचे में जाके उसको टाइटली बंद कर देता है। तो उसी तरह से ये एक दिस इज अ प्लग डोर। ये पहले बाहर की तरफ आप पुश करेंगे, फिर आप इसको खोल पाएंगे, नहीं तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल स्थिर है और फिक्स्ड है। ठीक है, ये सारी वो कोच की इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि हम लोग रोजमर्रा के तौर पे देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ये क्या है? तेजस का स्लाइडिंग डोर, इजंट इट? तेजस में कितने लोगों ने सफर किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है? सफर से मेरे मतलब दोनों तरह के सफर का है। एनीवन? नहीं किया है, ओके। मैंने भी अभी तक नहीं किया था, लेकिन आज सुबह मैं ये
बड़ौदा से दिल्ली लौटा हूँ तेजस से ही, तो इसलिए आई कैन से कि हाँ ऑल राइट। तो तेजस में क्या होता है, तेजस में ये होता है कि ये जो दरवाजे होते हैं ये बंद हो जाते हैं। दीज आर सील्ड एक्सटर्नल स्लाइडिंग डोर्स एज यू कैन सी। ये इस तरह से they move like this and they get sealed. So how many of you know what this is over here? ये क्या चीज है? This is a passenger amenity. बेबी को बैठाने के लिए टॉयलेट्स में रहता है सर ये। चलो Exactly. It is a baby बेबी फीड baby feeding birth. Yes, exactly. क्या नाम है सर? बेबी जी, इसका क्या नाम क्या बोलते हैं सर? नाम एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है। ये आई थिंक इसका टॉयलेट अलग में लगा अलग होता जगह है का शायद अलग ये। है। एग्जैक्टली जी। मिस्टर श्यामल सरकार। ओके। हाँ, नहीं प्लीज गो अहेड बोलिए। हाँ सर, ये टॉयलेट में लगा होता है बेबी को हाँ कैरी करने के लिए। अगर मदर के साथ जी बेबी रहता है तो इसमें वो उसको प्रॉपर्ली बैठाल के रख एग्जैक्टली सकते हैं। हाँ। जी। एंड ये जो स्ट्रैप्स हैं ये इस तरह से होते हैं कि बेबी को आप इस तरह से सिक्योर कर सकें कि वो ट्रेन जब हिलेगी डुलेगी तब भी वो बेबी सीट से गिर नहीं पाएगा। सो दिस इज द ये इसका अलग अलग रेलवे में अलग अलग नाम है। किसी ने इसका नाम पूछा था। इसका ऐसे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट टेक्निकल टर्म नहीं है। अगर इफ आई एम रॉन्ग, अगर इसका कोई टेक्निकल टर्म है तो प्लीज कोई बता सकता है। मिस्टर श्यामल सरकार अगर आप बता सकें इसका हाँ टेक्निकल सॉरी टर्म। सर, टेक्निकल नाम नहीं मालूम है। हाँ एग्जैक्टली इसका बेसिकली इट इज द बेबी कैरेज इन द टॉयलेट। फाइन। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज? लेट अस स्किप दिस फॉर अ मोमेंट। टॉप राइट हैंड पे आ जाइए अपनी स्क्रीन के। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर लगा है ये क्यों लगा है? ये एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज? सर अग्निशामक है ये। एग्जैक्टली अग्निशामक है। जी। अग्निशामक है एंड व्हाई इज इट एन आपात इम्प्रूवमेंट? स्थिति में अगर मतलब किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी हो जाती है फायर से संबंधित, तो हम जी इसका यूज कर सकते हैं, या पैसेंजर कोई भी इसका यूज कर सकता है और उस आग को रोक सकता है। एग्जैक्टली ये जो स्टील का वायर रोप है जिससे ये बंधा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? सर एंटी थेफ्ट टाइप है ये। एंटी थेफ्ट डिवाइस। थैंक यू। किसने बोला? आरुषि आई थिंक। थैंक यू आरुषि। सो दिस इज एंटी थेफ्ट डिवाइस। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट दिस इज? बॉटम लेफ्ट पे आ जाइए एक मिनट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट दिस इज? ये क्या चीज है? दिस इज द मतलब ये अरेंजमेंट आपको कौन सी कोच में मिलेगी? Stodome Anyone? coach. Vistadome. Yes. किसने बोला? Thank you, Mr. Praveen Kumar. Yes, this is the Vistadome. Vistadome coach, as in the tourist coaches that are available in certain scenic locations and in Bombay coaching depot. Anybody here from Bombay coaching depot, Western Railway? कोई है? अच्छा. Can anybody tell me what this is? ये कलर स्कीम बहुत बहुत यूनिक कलर स्कीम है। किसकी है? वो सर opposite color. सर तेजस ट्रेन की आई थी, शायद तेजस ट्रेन की। हेलो। हाँ मिस्टर प्रवीण कुमार, आई एम सॉरी वो एक सेकंड के लिए मेरा ऑर्डर हिल गया था। हाँ गो अहेड। मिस्टर बी प्रवीण कुमार आपने क्या Sir, कहा? both are जरा opposite colors, sir. Of course both are opposite. Which coach can we find this? This is a very specific color scheme. It was in all the newspapers when the coach started. सर तेजस की आई थी। तेजस की चेयर कार, तेजस की चेयर कार है। दिस इज द फर्स्ट कलर स्कीम ऑफ तेजस। एंड दिस मटेरियल, ये मटेरियल क्या है जिससे ये बना हुआ है ये सीट? ये मटेरियल क्या है?
This material was also ये इको फ्रेंडली मटेरियल है जिससे जिससे तेजस ने अपने कोचेस के सारी अपहोल्स्ट्री बनाई थी. अगर कोई अगर किसी ने कभी वो देखा हो आपके न्यूज़पेपर्स करीब 5-6 साल पहले, तो इस मटेरियल का भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था. It is an eco-friendly material. Any guesses? चलो, let's move on from here. अच्छा, ये जो है, ये क्या चीज है? This color scheme is even older than the Tejas. This color scheme, anyone? Bottom right पे आ जाइए. Bottom right last photograph पे आ जाइए, जो कि अभी ब्लू से मैंने उसको किया हुआ है. Anybody can tell me what that is? Obviously, third AC coach. थर्ड एसी कोच का एक यूनिक टाइप की कलर स्कीम थी, एंड एक यूनिक टाइप का फंक्शनैलिटी भी थी. इसका वीडियो भी बहुत शेयर हुआ था व्हाट्सएप पे, मुझे याद है. एनीवन प्लीज. Sir, they have used light color scheme in this so that we feel it more spacious. So that we feel it more spacious, yes. And you are correct, but there is one other aspect. कौन सी कोच है ये? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? Which coach? It is one of the coaches that we saw on the previous slide. अच्छा, okay. Is it Antyodaya, is it Humsafar, or is it three-tier economy? Three options. Antyodaya or Humsafar or three-tier economy? Three-tier economy. Three-tier economy. Okay. Sorry, Mr. Omkar Nath Mishra. Sorry, it is a good guess, but no. This is actually the Humsafar. And this color scheme was introduced also partly because each of these, partly because this, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख सकते हैं पीवीसी, ये जो है पीवीसी वॉल फिनिशिंग की गई है. या फिर फॉर एग्जांपल ये जो सीट्स हैं इनमें से कहीं कुछ ना कुछ एक कोई सीट जो है ऐसे लिफ्ट होके एक एक्स्ट्रा सीट बना सकती है फॉर सिटिंग ट्रैवलर इन द डे टाइम. ये जो विंडो ब्लाइंड है, दिस इज एक्चुअली नॉट योर ऑर्डिनरी विंडो ब्लाइंड. सो इट इज आंसर. Now, let us, before I move on, let us quickly go to this aspect. ये कोई मुझे बता सकता है? Top row, second from the right. What is this thing? ये long fish-shaped चीज क्या है? Anyone can tell, please. Take a good guess. ये वो चीज है जिसके साथ हम सब लोगों ने काम किया कभी. Anyone?
चल, I'll give you one hint. ये Sintered pad. Sintered, go on. किसने? हाँ, yes, Mr. Praveen Kumar. Sintered pad, sir. Sintered what? Sintered pad. Pad for what? You are correct. You are absolutely correct. But for what? Is a electro-pneumatic assisted brake system, sir. Mr. Praveen Kumar, excellent. Excellent. Thank you. Yes, you are absolutely right. It is the it is a sintered brake pad, and these things that you see over here, these are nothing but sintered ceramic inserts. These little hexagonal things, ये जो लगे हुए हैं, ये consumables हैं उसके. And वो एक and इनको and जब ये घिसने लगेंगे तो इनको निकाल के फिर से नए लगाए जा सकते हैं, रिप्लेस किए जा सकते हैं, ताकि वो हमारा ब्रेक पैड ज्यादा लंबा चले. एंड इनका ग्रिपिंग पावर काफी अच्छी है और इसलिए गाड़ी की ब्रेक पावर बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, हमारी मिनिमम ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाती है. Yes, absolutely right, Mr. Praveen Kumar. Sintered brake pads for the electro-pneumatic braking system. Thank you. Now, as for Tejas leather, ये जो upholstery है, this is recycled vinyl leather. So therefore it is an eco-friendly material because it is not real leather and it is also not this thing. It is synthetic. It is not क्या कहते हैं, in short supply or anything. So therefore it is a plentiful supply of cheap artificial synthetic leather, vinyl leather, and it is and that is also recycled. So this is very eco-friendly upholstery, जिसको इस format में with these yellow and blue berths chair car में लगाया गया Tejas coaches. So these are some general improvements, and these are all low-tech improvements. Any questions so far? Anyone? अरे कोई नो सर बोल दो तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कोई सुन रहा है. No, sir. Thank you. So now let's go on to some high-tech improvements, which is where we enter the area of smart coach. Smart coach एक ऐसी चीज है जो कि जैसे कि मैं कह रहा था हाईटेक इंप्रूवमेंट्स, यानी कि बहुत ही ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड और आईटी बेस्ड इंप्रूवमेंट्स हैं ये. एंड इनमें हम जैसे कि देख सकते हैं ईथरनेट वर्किंग, व्हिच मींस दैट द कोचेस आर नेटवर्क्ड, एंड इस नेटवर्क्ड कोच के माध्यम से हम लोग इंटरनेट इनेबल्ड टूल्स के माध्यम से हम लोग अलग अलग तरह के सेफ्टी ओरिएंटेड एज वेल एज पैसेंजर ओरिएंटेड फीचर्स हम लोग दे सकते हैं. तो सेफ्टी ओरिएंटेड फीचर्स हो गए जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टिव एनालिसिस कि भाई आपकी बेयरिंग कब फेल होने वाली है, या फिर पैसेंजर ओरिएंटेड फॉर एग्जांपल सीसीटीवी, नेटवर्क सीसीटीवी. तो जिनको अगर किसी एंटी सोशल एलिमेंट ने अगर आके तोड़ भी दिया तो भी उसकी फुटेज तो रहेगी. So let's watch some videos. These are some very interesting videos which will not take very long to watch, but I think will be interesting. ये जो लिंक है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं चैट में. Please watch these videos on your own if you are unable to do that. ठीक है, please watch these videos. अगर वैसे मैं यहाँ पे भी प्ले करूंगा, मुझे पता है कि साउंड नहीं आएगी, लेकिन मैं होप करता हूं कि थोड़ा सा आपको दिखा सकूं. स्क्रीन मेरी दिख रही है सबको? Yes, sir. Sir. Thank you. Okay. This is the PICCU. ठीक है, this is the PICCU, which is the central processing unit of the coach, of the smart coach. This is the network. This is the CPU. ये है आपका इंटरैक्टिव डिस्प्ले, which is like a control panel, जिससे कि हम लोग अलग अलग तरह के सिस्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड HMI. दिस इज HMI, ह्यूमन मशीन इंटरफेस.
That is for, he's just shown you the faults. This is the status of all the items that are there. जो green में है वो काम कर रहे हैं, जो red में है वो भी switch off है. And आप manual selection भी कर सकते हैं, and आप इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस ये जो टच स्क्रीन पे जो दबा रहा है, यही वो चीज है जो कि सिस्टम को कंट्रोल कर रही है. दिस इज दैट सेंट्रल, दिस इज दैट मेन मतलब कंट्रोल पैनल, एंड इट इज कैसे बोलूं, एंड इट इज It is a human machine interface. इसका नाम है HMI, human machine interface. So as you can see, अभी उसने देखा तो वाटर टैंक का सिस्टम आपको दिख रहा है, वाटर टैंक एंड फ्लशिंग सिस्टम आपको दिख रहा है कि कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, राइट. एंड यू हैव वो वाटर पंप जब वन ऑन है तो टू नहीं ऑन हो सकता, टू ऑन है तो वन नहीं ऑन हो सकता, है ना. ये अलग अलग तरह के वो स्टेटस ऑफ वेरियस सिस्टम्स and energy meter, for example, and various kinds of other programming. This you can see is a smart display. GPS के माध्यम से वो देख सकते हैं कि ट्रेन कहाँ पे है, और ट्रेन जहां पे भी है उसका नियरेस्ट स्टेशन जो है वो दिखा के वो उसको डिस्प्ले करते हैं कि भी देखो ये है आपकी ट्रेन, या आपकी ट्रेन जो है अभी तिलक ब्रिज पे खड़ी है, आपकी ट्रेन अभी कानपुर सेंट्रल पे खड़ी है, आपकी ट्रेन अभी आगरा कैंट पे खड़ी है. This is an air quality meter which is basically a good way of sensing the air, ताकि अगर कोई बीड़ी पीता है ट्रेन में बैठ के तो वो उसको सेंस करके उसको कर सके, उसको अलर्ट कर सके, अलार्म बजा सके किसी भी तरह से. ये ट्रेन के बाहर वही चीज लगी है जो कि हमने देखा ट्रेन के अंदर जो स्मार्ट डिस्प्ले लगा था. अभी ये सिर्फ इंडियन रेलवेज दिखा रहा है क्योंकि ट्रेन अभी स्थिर खड़ी हुई है, लेकिन जब ट्रेन चलेगी तो ये दिखाएगा ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की दिशा और ट्रेन का अगला अपकमिंग स्टेशन. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से अगर चलेगी ये ट्रेन तो दिखाएगा कि ये रतलाम पहुंचने वाली है या कोटा पहुंचने वाली है. दिस इज इमरजेंसी अलार्म. तो अभी इसका वर्किंग जो है हम अभी अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा. इमरजेंसी अलार्म सिस्टम, कोई मुझे बता सकता है ये क्या चीज है? ये तो हर किसी ने देखी है. ऑल ऑफ यू कैन सी दिस, राइट? ये तो हर किसी ने देखी है शायद, नहीं? Again, all smart displays. Again, CCTV. This is the water level indicator. एक ओवरहेड वाटर टैंक होता है, एक अंडरस्लैंग वाटर टैंक होता है. तो ओवरहेड वाटर टैंक एज वेल एज अंडरस्लैंग वाटर टैंक का वाटर लेवल इंडिकेटर, ताकि कोच वाटरिंग को प्रेडिक्ट किया जा सके. दिस इज पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म. पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म से होता ये है कि अगर कोई पैसेंजर फंस गया टॉयलेट में फॉर एनी रीजन, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होगी, कुछ भी हो गया, then he can press this for 7 seconds and then अलार्म बजता है पूरी कोच में. and see, concerned आदमी के पास फोन आया ऑटोमेटिक. सर हाँ, मिस्टर कटिपंग विजय कुमार, गो अहेड. मिस्टर के विजय कुमार, सर ये कौन सा कोच में प्रोवाइड? ये स्मार्ट कोचेस. ठीक.
हाँ प्रवीण कुमार जी, आप आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। Okay. Similarly, again, this is the same thing. There is the occupation sensor कि occupied है कि नहीं, and अगर toilet occupied, then it will immediately give you an automatic announcement of the various things that are happening. This is underground water, underslung water indicator. आप देख सकते हैं underslung water tank and ये है underslung water indicator. This is overhead water indicator and pump health indicator. So we can see that that it is completely full at the moment. Overhead water indicator. WSP. How many of you know how many? Is there anybody here who does not know what is WSP? Wheel slide protection. Everybody knows. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. This is one system that I will tell you. Axle mounted perpetuum system, which is basically an automatic wheel health indicator and detector. So इसके बारे में we will have a separate discussion. This is the automatic wheel health indicator that is mounted onto the end of the bearing. ये जो है ये कोच का Ethernet है. Over here you can see three kinds of couplings between the coach. One coupling is this. One coupling is this, which is the CBC, right? One coupling is this, which is the, ये कौन सी coupling है? Hose pipe for air brake. Electrical items. क्या? Seems to be electrical one, sir. Oh, sorry. Yes, this is the hose pipe for air brake. My bad. My bad. Thank you. This is for electrical items. And can somebody tell me what this is? This is the Ethernet connection between coaches. This is the way in which two smart coaches can be connected. ये जो plug है, ये plug अगर निकाल के यहाँ पे कर दिया जाए, then the coaches are connected by means of this wire. ठीक है? This is the plug that is an Ethernet connection between the coaches. So as you can see, this is the way in which the entire this is the way in which the entire the smart coach works. So these are the features, the various features of the smart coach. तो अब ये features कहाँ से आते हैं? What are the features of the smart coach in as much as their working is concerned? वो कैसे काम करता है ये सब? उसका एक ओवरव्यू, एक ब्लॉक डायग्राम टाइप का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे जाएंगे. सेंटर ऑफ द स्मार्ट कोच है एक PICCU.
passenger information and coach computing unit. The PICCU is like the brain of the coach. It is the CPU of this computer. It is the motherboard of your mobile. It is the ultimate. It is the thing to which everything else is connected. And पिक्को की जो प्रोग्रामिंग है, because now we'll call it the पिक्को की जो प्रोग्रामिंग है उसके बेसिस पे आपका एयर कंडीशनिंग कंट्रोल होता है, या सीसीटीवी कंट्रोल होता है, या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम कंट्रोल होता है, या टॉयलेट ऑक्यूपेंसी कंट्रोल होता है, या एनीथिंग एल्स, कॉल बेल फॉर अटेंडेंट कंट्रोल, वो सारी चीजें पिक्को में ही है। तो पिक्को में जो प्रोग्रामिंग है और जो चीज आप कनेक्ट करना चाहें, जो सिस्टम आप उससे कनेक्ट करना चाहें, वो फिर कनेक्ट हो जाता है। And the PICU is, as I said, is the brain of a smart coach, in that it is a single coach, it is a single computer. In fact, it is a single CPU. यहाँ पे हम देख सकते हैं, it is a single CPU with a display. तो Linux based, totally open source, and it is a single host. It functions as a single host for any kinds of applications that are functioning. Like your computer, your Windows computer, your mobile functions as a single host. उसके ऊपर आप WhatsApp भी चलाते हैं, उसके ऊपर आप अपना ब्राउजर भी खोलते हैं, उसके ऊपर आप ये अपना ऑनलाइन वर्ड डॉक्यूमेंट भी चलाते हैं, उसके ऊपर आप वेबएक्स भी इंस्टॉल कर रखा है, उसके ऊपर चार्टो गेम भी खेलते हैं, और उसी से आप कैमरा और स्कैनिंग और ये सब चीजें करते हैं। तो हर तरह की चीज आपके उसी मोबाइल पे में समाई हुई है, एंड उस मोबाइल का सिंगल होस्ट है एंड्रॉइड या iOS। तो उसी तरह से आपका लैपटॉप, आपके लैपटॉप या आपका जो ऑफिस का जो कंप्यूटर है, उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ब्राउजर, एक आध गेम, एक आध कोई मीडिया प्लेयर, VLC वगैरह, ये सब होते हैं, लेकिन उनका सिंगल होस्ट क्या है? विंडोज। सो द पिक्कू इज लाइक दैट सिंगल होस्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड मशीन दैट इज द स्मार्ट कोच। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिकॉज इट इज अ सिंगल कंप्यूटर, इसलिए आप कभी भी इसको रेट्रोफिट कर दो, एक नए कोच में, पुराने कोच में रेट्रोफिट कर दीजिए, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स यू कैन स्केल इट। आपको ज्यादा चीजें कनेक्ट करनी है, आपको ज्यादा अच्छा हार्डवेयर चाहिए, आपको बस लगता है कि भाई हम 3-4 चीजें कनेक्ट कर दें, जीपीएस कनेक्ट कर दें, सीसीटीवी कनेक्ट कर दें, एक टॉयलेट ऑक्यूपेंसी सेंसर कनेक्ट कर लें, पीए सिस्टम कनेक्ट कर लें, ठीक है, नो इश्यूज। यू कैन हैव इट इज अ सपोर्टिंग एप्लीकेशन। आपको एक कम हाई क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से आपका काम चल जाएगा। And as we can see that cornerstones of network LHB trains, इसके हमारे सिद्धांत क्या है? हमारे मूल सिद्धांत, पहली चीज ये है पैसेंजर कंफर्ट। पैसेंजर्स आर आवर होस्ट्स, तो पैसेंजर कंफर्ट, उनके लिए हर चीज, पैसेंजर इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सीसीटीवी, पैसेंजर एमिनिटी आइटम्स, राइट, and safety in the sense of onboard condition monitoring system, safety in the sense of, for example, data analytics for failure probability or failure analysis, and train-wide networking. What do we mean by train-wide networking? We mean that that we can have a centralized train monitoring system through our control room or through somebody in the power car, or through somebody else sitting in a control room. मैं आपको दिखाता हूँ। And all of these things are made possible by something called IoT. Can somebody tell me what is IoT? IoT क्या चीज है? What is IoT? Anyone? Internet of Things. I think Internet of Things. Yes, exactly. Internet of Things. What is Internet of Things? Anyone? Okay, so Internet of Things is basically a mechanism by which you can attach a chip to anything. आप किसी भी चीज में आपने एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा दिया, और तो उस चिप के माध्यम से आप उसका एट ए डिस्टेंस आप कहीं और से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, आज की तारीख में स्मार्ट डोरबेल बहुत पॉपुलर हो गई है, खासकर बड़े शहरों में जहाँ पे थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, या फिर जहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों को अगर हम घर पे छोड़ते हैं, या कोई बुजुर्ग लोग हैं वो कई बार अपने घर में लगवाते हैं, उससे क्या फायदा होता है? नॉर्मल डोरबेल क्या होता है?
एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसने बाहर से जाके बटन दबाया, आपके घर के अंदर टिंग टिंग बजी। लेकिन और स्मार्ट डोरबेल में पहली चीज ये कि एक कैमरा लगा हुआ होता है, जिससे कि जो कि ऑन हो जाता है, जो कि दिखाता है कि बाहर कौन है। जब वो डोरबेल बजती है तो घर के अंदर तो टिंग टिंग बजता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ मोबाइल पे भी एक अलर्ट आता है कि भी आपके दरवाजे पे कोई है। अगर आप घर पे नहीं हैं, या फिर अगर आप कहीं घर से बाहर हैं, कहीं घर से दूर हैं, तब भी आप उससे बात कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से कि मतलब वो जो कैमरा की फीड है वो भी आपको मोबाइल पे आएगी इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि उसमें एक चिप लगा हुआ है जो कि नेट, जिसके पास नेट कनेक्टिविटी है। तो वो मोबाइल की फीड आप अपने कैमरा की फीड आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, और वहीं पे देखते देखते आप बात कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है आप पार्सल दरवाजे पे ही छोड़ दीजिए, या थोड़ी देर बाद आइए, या फिर ये कौन आ गया। एंड अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, तो फिर देन यू कैन ऑलवेज हैव अ डिस्ट्रेस सिग्नल। आप उसका रिकॉर्ड जो है कि कौन आया था, कौन गया था, 1 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, जब आप नहीं थे, उसका रिकॉर्ड आप क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं। कि कल को आपके पास वो भी कौन हमारे दरवाजे पे आया था, कौन नहीं आया था। इतनी सारी तरह की चीजें। क्यों? क्योंकि इट इज अ चिप दैट इज अटैच्ड टू एन एनालॉग डिवाइस टू कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल डिवाइस। एंड वो डिजिटल डिवाइस जब इंटरनेट से जुड़ जाती है, तो उसका एक इंटरफेस हो जाता है, जो कि आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से, आप दुनिया में कहीं से भी आप उसको देख सकते हैं, एंड आप एक्शन ले सकते हैं उसके हिसाब से। So it is a connectivity of things. So for example, you can have smart tables, smart chairs, smart ACs, smart doorbell की बात तो ऑलरेडी हो चुकी है। हर तरह की चीज आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्मार्ट वेस्ट पेपर बास्केट्स आ गई हैं, राइट, जो कि इको फ्रेंडली वेस्ट, अगर इको फ्रेंडली तौर पे अगर सेग्रीगेटेड नहीं है तो अलार्म करती हैं कि भाई नहीं नहीं, ये मिक्स्ड वेस्ट आप डाल रहे हैं हमें। हर तरह की चीज है। So this Internet of Things has been applied to the coach, because in the form of the smart coach, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमने हर चीज को इलेक्ट्रिकल बना दिया है। टॉयलेट सेंसिंग मॉड्यूल, ऑक्यूपेशन सेंसर, एसी सिस्टम, उसका ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसर एंड ऑटोमेटिक टेम्परेचर मॉडिफायर, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, सब लोग जानते हैं व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन क्या है, बैटरी मॉनिटरिंग, वाटर लेवल डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर, व्हील हेल्थ इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, किसी भी और तरह की चीज आप इमेजिन कर सकते हैं, CCTVs, all of them are nothing but electronically connected devices that are all centrally connected to the PICO. And the PICO is doing nothing but collecting the data, analyzing it, and sending it up onto the cloud for somebody else to take a look at their convenience. ऐसे भी जरूरत नहीं कि अभी तुरंत कोई बैठा रहना चाहिए। So the passenger comfort applications are many on the PICO. ये सारे वो पैसेंजर amenity आइटम्स हैं जो कि हम लोगों ने कुछ चीजें इसमें से डिस्कस कर रखी हैं कि डेस्टिनेशन बोर्ड्स हो गए, या पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया कि हाँ ठीक है, आप कानपुर सेंट्रल पे है, ट्रैवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स दिल्ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। CCTV हो गया, नेटवर्क CCTVs which we will go on with, water level monitoring. So let's take a quick look at all of these. So टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, I have about half an hour, so I think that will be enough. So no issues. So for example, all of us are familiar with things like PA system. For example, अभी जब मैं बड़ौदा जा रहा था, तो ट्रेन जो थी वो लेट हो गई, तो PA सिस्टम पे अनाउंसमेंट हुआ कि आगे ट्रैक में दिक्कत की वजह के कारण उसको ट्रेन को डाइवर्ट करने की आवश्यकता रही है, और इसको अब अजमेर के थ्रू डाइवर्ट करके फिर बड़ौदा पहुंचाया जाएगा, और ऐसी चीजों की इसमें वो रहेंगी, इस तरह की इसमें डिले आएगा। So it is nothing but a PA system. Infotainment is something that we can see. Infotainment is nothing but a 10-inch screen, जो कि सीट बैक पे, जैसे कि एयरलाइंस में होता है ना, एक 8 इंच की स्क्रीन या एक 10 इंच की स्क्रीन आपको अपने सामने वाली सीट के पीछे दे दी जाती है, और उस स्क्रीन पे आप वो देख सकते हैं जो कि आपके पास अपलोडेड है, ये जो भी एयरलाइन ऑफर कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि आप कुछ म्यूजिक वीडियोस देख सकते हैं, आप कुछ मूवीज देख सकते हैं, आप कुछ किसी तरह के कोई ट्रैवल गाइड सुन सकते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स। सो इंफोटेनमेंट सिस्टम इज सिमिलर टू दैट। इसमें भी आपको एक स्क्रीन दे रखी है, 10 इंच की स्क्रीन, एक्सेप्ट दैट इट इज हुक्ड अप टू द कंप्यूटर।
it is hooked up to the local Wi-Fi hotspot, coach Wi-Fi, as you can see over here. So and if you connect to the same coach Wi-Fi, then within the coach you can use your smartphone or your laptop to stream whatever you want to play onto this screen, which is the infotainment system. तो it becomes a very useful resource कि आपके मोबाइल पे आपने कोई मूवी देखे या कुछ म्यूजिक वीडियोस आपने रखे हुए हैं और आपको लग रहा है कि भाई थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होती तो आप उसको देखते हुए चल सकते हैं. So then you can connect your mobile to the coach Wi-Fi hotspot and stream that to the infotainment display. Similarly, destination board हम देख चुके हैं कि which will show you, like for example, coach number, train name, and where it is going. And ये जो चीज है ये इस तरह से होती है कि it is through a cellular process of triangulating the location of the coach through the GPS signal. Similarly, IP based video cameras. कोई देख सकता है इस वाले टॉप राइट हैंड फोटोग्राफ एक बार आप देखिए, वो दिख रहा है कि सबको? Everybody can see this photograph. Yes, sir. So you can see कि it is a CCTV, and CCTV के ऊपर हम देख सकते हैं कि IP एड्रेस लिखी हुई है 192.168 192.168.1.66. It is the IP address of a network CCTV camera. This IP address is basically an internal IP address that is basically hooking it up to the PICU, and the PICU is performing these kinds of analysis, facial recognition software of wanted people, या किसी भी तरह का अगर कोई इस तरह का facial tagging तो नहीं हम करते हैं यहाँ पे, लेकिन definitely facial recognition of wanted people as well as just facial recognition कि भी ये human है और ये कोई चित्र है या कुछ और है. So it can do that kind of analysis, and then that analysis is relayed to the control room. वो कोच के अंदर किसी को बैठ के पूरे टाइम देखते रहने की कोई जरूरत नहीं है. The video analytics is provided on the cloud, or it is capable within the PICU, and the video feed is sent across the cloud. So it is remote footage. And ये हम देख सकते हैं कि सारे important locations में, कॉरिडोर में, एंट्रेंस पे, ये अटेंडेंट एरिया में, सारे important locations पे अपना CCTV कैमरा लगा हुआ है, so that to prevent any kind of anti-social activity within the smart coach. उसी तरह से ये these are some passenger venue guidance. There are some, हाँ, किसी ने कोई कुछ पूछना चाह रहा है? Somebody unmuted for a second. Somebody wants to ask something. Anyone? Abhishek, you wanted to ask something? Amy Havra, or is it Amy Heldwell? Okay. So these are the underframe monitoring systems. So these are the safety monitoring. Safety monitoring in the sense of, for example, wheel health, RFPU control, human machine interface for ease of operation, energy meter. वो सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं. But how does it work? Ultimately, all this remote monitoring, it works by one method, and that is GPS. How many of you use a mobile phone? सब लोग यूज करते हैं स्मार्टफोन? किसी ने कोई ऐसा है जो कि नहीं यूज करता है? Anyone who does not use a smartphone, please. Okay, I will assume that everyone uses a smartphone. So your smartphone works on GSM, right? It works on GSM, which is nothing but your cellular network. Airtel, Idea, Vodafone, Jio आप सोच सकते हैं. तो वो किस तरह से होता है? वो ट्रेन को बेसिकली GSM से कनेक्टेड है, यानी कि मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है, यानी कि वही इंटरनेट जो कि आपका स्मार्टफोन पे आपके फोन पे इंटरनेट चलाता है. एंड वो जो इंटरनेट, एंड देन दैट गोज थ्रू द एप्लीकेशन सर्विस. जिस तरह से कोई भी एप्लीकेशन काम करती है, जिस तरह से आप व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी इसी तरह से आती है कि व्हाट्सएप गोज फ्रॉम योर फोन. यहाँ पे जहां पे ट्रेन है, एक सेकंड के लिए सोचिए कि फोन है,
आपका फोन से जैसे व्हाट्सएप मैसेज निकली, जीएसएम पे गई, इंटरनेट के थ्रू होते होते व्हाट्सएप के सर्वर पे पहुंची, सर्वर ने उसको बांट दिया कंसर्न डिवाइस पे, जिस डिवाइस पे जिस नंबर पे आपने भेजा है वो व्हाट्सएप चल रहा। तो दिस इज द सेम लूप व्हिच इज फॉर रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेन। कि ट्रेन मोबाइल नेटवर्क से जाती है, मोबाइल नेटवर्क ट्रेन का डेटा मोबाइल नेटवर्क से होके जाता है, डेटाबेस में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो कोई जो भी उसकी एप्लीकेशन है, जो भी उसका जो माध्यम है, वो हम लोग ये जो भी उसका सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से होते होते वो कंसर्न टर्मिनल पे या कंसर्न कंप्यूटर पे या कंसर्न ऑफिसर के मोबाइल पे जाके दिख जाती है कि अच्छा ठीक है, दिस इज द स्टेटस ऑफ दिस ट्रेन। हो सकता है कि ये कंट्रोल रूम दिल्ली में हो, और हो सकता है ये ट्रेन जो है गुजरात पहुंच गई हो, लेकिन फिर भी इसकी मॉनिटरिंग यहां से हो सकती है। So what is remote monitoring? Remote monitoring is exactly this. For example, अगर बेयरिंग फेल होने का अंदेशा है, ऑनबोर्ड कंडीशन मॉनिटरिंग सिस्टम ने दिखाया कि भाई बेयरिंग फेल हो सकती है, that data gets relayed to something like this. ये ऑफ कोर्स पुलिस कंट्रोल रूम की फोटो मैंने नेट से निकाल के डाली है। दिस विल नॉट बी अ पुलिस कंट्रोल रूम, इट विल बी अ रेलवे कंट्रोल रूम, इट विल बी अ रेलवे कंडीशन मतलब मॉनिटरिंग सेंटर, लेकिन इट विल बी स्टैटिक। यहाँ पे ट्रेन पे कल को अगर किसी ने जाके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम को सपोज करें किसी ने जाके तोड़ भी दिया, तो भी द ट्रेन बिकम्स द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बिकम्स अवेयर ऑफ द इंसिडेंट। सिमिलरली अगर एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स अगर किसी सिस्टम में अगर खराब भी हो गए, डजंट मैटर, दीस पीपल विल नो। एंड उल्टा एयर कंडीशनिंग फॉर एग्जांपल कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटर। हो सकता है कि वो एसी ठीक न कर पाए, लेकिन वो जरूर इस ह्यूमन मशीन इंटरफेस के माध्यम से कोच में ही टेम्परेचर कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, देख सकता है, बता सकता है कि तो उसको फेल्ड दिखा रहा है, राइट? ऑल ऑफ दोस थिंग्स विल बी पॉसिबल। So a lot of real-time monitoring and a lot of real-time attention gets paid to the comfort of the passenger or to the safety of the train. इसी तरह से एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के बारे में मैंने बात करी थी, which is basically VOC sensors, volatile organic compounds. सिर्फ स्मोक डिटेक्शन तो एक बहुत आगे की चीज हो गई कि स्मोक बहुत देर में हम लोग किसी भी आग से स्मोक उठती है। अगर स्मोक उठ रही है, अगर धुआं उठने लगा है, इसका मतलब लपटें कहीं ना कहीं, आग की लपटें कहीं ना कहीं पकड़ चुकी हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं थ्रू दिस एयर क्वालिटी सेंसर कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हल्का हल्का सा धुआं कहीं से निकल रहा हो, किसी को पता नहीं चल पा रहा हो, कहीं स्पार्किंग हो रही हो, कहीं कोई जलती हुई बीड़ी कोई छोड़ के चला गया हो, कोई बीड़ी पी ही रहा हो कोच में, ये सब चीजें। सिमिलरली अपग्रेडिंग कोच हाइजीन, बिकॉज वाटर लेवल इंडिकेटर्स के पहले कभी कभी ऐसा भी होता था कि कोच वाटरिंग हुई और फिर अगली कोच वाटरिंग स्टेशन से पहले ही पानी खत्म हो गया, तो पैसेंजर्स को बहुत असुविधा होती थी। तो अब ऑटोमेटिक कोच वाटरिंग सिस्टम पॉसिबल है, राइट? Similarly, we have wheel bearing monitoring system. Wheel bearing monitoring system is the perpetuum system. Perpetuum मतलब ये है जो मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, जो कि एक्सल के एंड में, सॉरी बेरिंग के ऊपर एक्सल के एंड में व्हील हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम या परपेचुअम वाइब्रेशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया था, जो कि बेरिंग के वाइब्रेशंस को और व्हील के वाइब्रेशंस को लेकर सेंस करते हुए एक व्हील हेल्थ इंडेक्स निकालता है। व्हील हेल्थ इंडेक्स क्या निकालता है? व्हील हेल्थ इंडेक्स, हायर इट इज द क्लोजर द व्हील इज टू फेलियर और क्लोजर द बेरिंग इज टू फेलियर। तो जैसे ही बढ़ने लगता है वैसे ही ये होता है कि भाई ये अब फेल होने वाली है, तो उसको समटाइम्स इवन 3 months इन एडवांस तक पता लगाया जा सकता है कि ये बेरिंग फेल होने वाली है, इसको पहले से बदल दो ताकि ऑन रूट कोई दिक्कत ना होने पाए। इनफैक्ट ये केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें कि एग्जैक्टली यही चीज हुई थी कि व्हील हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम ने दिखाया कि व्हील में डैमेज है। विजुअली उसको इंस्पेक्ट किया गया तो देखा गया कि कोच में कोई डैमेज नहीं है, लेकिन फिर भी
व्हील को निकाल दिया गया बिकॉज वो पायलट बेसिस पे ओबीसीएमएस चल रहा था, और उसकी जब टर्निंग की गई तो देखा गया कि व्हील में सब सर्विस डिस्क की वो डिफेक्ट थी, सब सर्फेस फ्लैगिंग है, राइट। तो इस तरह की चीज पॉसिबल है through something of this sort, which is basically a preventive, or we can say a predictive condition monitoring system for our bearings, wheels and track. This is that case study जिसमें हमने देखा था कि व्हील हेल्थ इंडेक्स जब बढ़ने लगी तो व्हील में वाकई त्रुटि पाई गई, व्हील में वाकई कुछ शेलिंग के निशान पाए गए, व्हील में वाकई कुछ सॉफ्ट सर्फेस डैमेज पाई गई ट्रेड में, तो which had to be rectified. So similarly, RMP, I will not labor the point, all of you know what I'm trying to say. तो ये सब चीजें हैं जो कि हम लोग देख सकते हैं. Now, one last thing I will leave you with in the next 10 minutes is the MSSBC. The MSSBC is basically it is the central it is like a control panel within the coach, basically. It is an interactive panel, touch based, जिसमें जो कि दिखाता है आपके सारे पॉइंट्स, सारे सिस्टम्स, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं काम कर रहा है, कौन सा ऑन है, कौन सा ऑफ है, एंड इट इज retrofitted to the PICU. So it is a way of controlling the PICU manually. It is a smart device, or it is a smart interactive device. So जैसे for example यहाँ पे for example water level indicator, या for example water pump आपको चलाना है, या आपको flush चलाना है कहीं पे कोच में, तो कंसर्न आपकी कोच हो सकता है, आप हो सकता है पैंट्री कार में बैठे हो, और हो सकता है कि वो कोच हो H1, तो उतनी दूर जाके आप फ्लश चला के वापस आएंगे, उससे ज्यादा आसान है कि आप यहाँ पे बटन दबाएं, वहां पे फ्लश चल जाएगा. So this MSSBC, which is what it's called, stands for Smart Switchboard Cabinet, right? This SSBC को PICU से connect किया जाता है. PICU remains the controlling entity, but MSSBC becomes the interaction. ये CPU है, ये स्क्रीन है. स्क्रीन से चीज नहीं चलती है, चला अल्टीमेटली CPU रहा है, लेकिन स्क्रीन becomes the interactive element, it becomes the human machine interface by which that can run. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि एक स्मार्ट कोच है, एक ऑनबोर्ड एक एंड टू एंड सोल्यूशन है, एक ऑनबोर्ड सिस्टम है जिसके माध्यम से उस समय की दिक्कत भी सुलझाई जा सकती है. ट्रेन मैनेजर को, यानी कि हमारे टीटी जो है, हमारे जो अटेंडेंट जो है, हमारे ऑफिसर्स जो है, हमारे कंट्रोल रूम में जो बैठे हैं, all of those people can send the response team, can give attention to a passenger's problems, can close a complaint, can prevent a fault, can make the train safer without much stress. And all that data can be logged so that we have a good idea about where our system is going, so that we can improve it further later on. So this becomes a virtuous cycle of monitoring, detection, fault detection, and repair, then review for improvement, and then finally ahead for more such things in the future. And I'll finish just in the next 2 minutes. So it is a PC based, so we can look at these systems not only through the control room, not only through the HMI, not only through the anything else, but through these web based management tools also. चाहे स्मार्टफोन ऐप हो, चाहे वेबसाइट हो, चाहे कुछ भी हो, becomes a rate performance. We can have a rate performance report, we can have application view, etc. अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स में आप इसको देख सकते हैं, अपने मोबाइल पे, अपने लॉगिन आईडी पे, अपने ऑफिस में, अपने चेंबर में, अपने या फिर कंट्रोल रूम में, या फिर कोच में. So that is as much as I can tell you at this time about Smart Coach. Anybody has any questions, please? Anyone has any questions? Sir. Sir. Yeah. Yes, go ahead, please. ठीक है सर. Hello, sir. Go ahead. Sir, in India, where in the smart coach technology, where it is being implemented, sir? I mean, which coaches we can see?
In which coaches can we see smart coach and technology being implemented? Yes, currently, sir. There are some coaches in Bombay. There are some coaches in Bombay Coaching Depot, in New Delhi Coaching Depot. There was one coach, 12229 in Lucknow Coaching Depot. Cafiat Express had a smart coach on which is based Kanpur Primary Maintenance. Cafiat Express had a smart coach on a pilot basis. It was removed just 6 months ago. And now smart coaches are now coming into, I think, if I'm not wrong, some coaches, even in Eastern Railway, no, not in Eastern, sorry, not in Eastern, Southeastern, I think. A few of these premium trains have smart coaches. Okay, sir. Definitely in New Delhi, I know, Kanpur, I know, Bombay, I know. These three, I know. These three coaching depots have smart coaches. They are using them, they are maintaining them in certain premium rakes like the Cafe Express. Anyone else, please go ahead. Thank you. Anyone else, please go ahead. Thank you, Mr. Vijay Kumar. Anybody else? कोई और किसी और को कुछ अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, कुछ भी anybody. Okay, so I think that brings us to the end of this particular class. ये material जो है वो आपको शेयर हो जाएगा. रामानु जी, ये मटेरियल प्लीज सबसे शेयर कर दीजिएगा प्लीज. एंड ये बाकी if any of you have any further questions, तो of course आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं. And बाकी if any of you have any further questions beyond this course, then you can always ask Mr. Ramanuj and वो मुझसे पूछ के आपके पास जवाब पहुंचा देंगे. One final call. Any other questions, or shall we close? One thing. This material, how can we get via WhatsApp group or some? We need to download through online. Mr. Ramanuj will give you this material either in the WhatsApp group or through the course page. Generally, what we do in IRIMEE is we upload the material on the course page at irime.org, and that where you will fill your feedback also. And वहाँ पे all the material is available for download on the course page. Yes. Okay. Thank you so much. Thank you. Somebody was saying something. Next class कब होगा? Mr. Vijay Kumar, I think your voice is a little not very clear. Okay sir, next class कितना बजे होगा? नेक्स्ट क्लास अभी रामानु जी आपको बताएंगे वो सब चीजें आपको WhatsApp पे माध्यम से पता. ओके सर. ठीक है. Okay, thank you all and good morning once again.